2. This is take 2. We're going to discuss the Polariton Spectra. Let's do it. So, what are polaritons? Polaritons, longitudinal optical phonons and transverse optical phonons were discussed in chapter 4. They are done, but we defer treatment of interaction of transverse optical phonons with transverse electromagnetic waves. Okay, we here. What does deferred mean? Deferred means delayed, yielded to someone else's decision, whose value is not realized. तो मतलब इन डिटेल उसको नहीं किया था. क्या को नहीं किया था? Let's go back. ठीक है, तो पहले क्या ने डिस्कस किया? पहले इंटरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन्स और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको साथ में डिस्कस नहीं किया था. सो व्हेन द टू वेव्स आर एट रेजोनेंस, the phonon photon coupling entirely changes the character of propagation. ठीक है, propagation क्या change होता है, and the forbidden gap is established for reasons nothing to do with periodicity. तो periodicity, लैटिस periodicity की वजह से कोई यहाँ पे बैंड गैप क्रिएट नहीं हो रहा है. ठीक है, it is something else. What is that? By resonance we mean a condition in which frequencies and wave vectors of both waves are अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. ठीक है, तो कौन दो टू चीज़ जो तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव्स है. ठीक है, कहाँ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल. ठीक है, द रीजन ऑफ क्रॉसओवर ऑफ द टू डैश्ड कर्व्स इन फिगर 11. टू डैश्ड कर्व्स इन फिगर 11, ओवरलैप ऑफ ये are dispersion relations of photons and transverse optical phonons in the absence of any coupling between them. ठीक है, ठीक है, तो जब कपलिंग नहीं हो रहा है तो फोटोन के लिए और फोनोन के लिए ये लाइंस है व्हेन देयर इज नो कपलिंग. ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं इन रियलिटी हाउएवर देयर आर ऑलवेज कपलिंग इम्प्लिसिट इन मैक्सवेल इक्वेशन एंड एक्सप्रेस्ड बाय डायरेक्ट्रिक फंक्शन. The quantum of coupled photon-phonon transverse wave is called polariton. This section we see how coupling is responsible for dispersion relations shown in as solid curves in the figure. ठीक है, तो ये जो कर्व्स है यहाँ पे, ये वाला, ये सब कैसे आने वाला है. ठीक है, the relation shown in figure all takes place at very low values of wave vector comparison with zone boundary. ठीक है, so this is important line, takes place ये वाला पे. ठीक है, all takes place at very low values of wave vector in comparison with zone boundary because at crossover, ठीक है, omega photon is c is equal to ck omega of photon is equal to omega phonon is equal to 10 to the power 3 hertz. Thus k is equal to 300 per centimeter. ठीक है, स्मॉल के क्या है, सी के यहाँ पे दिया हुआ है, सी इंटू के. ओके, at an early warning though, although omega is necessary arise in the theory, effects do not concern longitudinal optical phonons. Longitudinal phonons do not couple with transverse phonons. ठीक है, साइड नोट, the coupling of electrical field E of photon with dielectric polarization of TO phonon is described by this equation. ठीक है, तो दो चीज़ है, coupling of electrical field and polarization of TO. ठीक है, dielectric polarization of TO by EM wave equation is this. ठीक है, by EM wave equation आने वाला है ये. ठीक है, C square K square E is equal to omega square whole into E into 4 pi P. ठीक है, एट लो वेव वेक्टर्स, यहाँ पे भी शायद वही बोला था.
very low values of wave vector in comparison to zone boundary. At low wave vectors, geophonon frequency omega t is independent of k. Uh, Omega t is independent of k. So इधर होगा लो वैल्यूज, ये लेफ्ट साइड में शायद टी ओ या इधर नीचे वाला के बारे बात कर रहा होगा. लेट्स गो. लो वैल्यूज ओमेगा टी ट्रांसवर्स is independent of k. The polarization is proportional to the displacement of positive ion relative to negative ion. So the equation of motion is like that of oscillator made uh, of an oscillator may be written as p is equal to NE. NQU. This is equal to minus omega square p plus omega t square p is equal to NQ square by ME. ठीक है. A plot of observed energy and wave vectors in polaritons and LO phonons in this GAP का crystals में होगा. The theoretical dispersion curve also are shown by solid lines. The dispersion curves for uncontrolled photons are dashed lines ये वाला. ठीक है. Where n is ion pairs of effective charge q and reduced mass m per unit volume. For simplicity, we neglect the electronic contribution of polarization. The equation 53 and phrases becomes this. यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे समथिंग बाय एम है, एन की स्क्वायर बाय एम है, यहाँ 4 पाई ओमेगा स्क्वायर है. ठीक है. यहाँ पे डिफरेंस में सी और के है, यहाँ पे डिफरेंस में टी वाला चीज़ है. ठीक है. दिस गिव्स द पोलरिटॉन डिस्पर्शन रिलेशन सिमिलर टू द प्लॉटेड फिगर्स इन 11. ठीक है. एंड 12. At k equal to 0, there are two roots, omega equal to 0, the photon, and omega square is equal to this. So omega equal to 0 and omega square is equal to this. Omega t plus 4 pi nq square by m. For the polariton here, omega t is the transverse optical phonon frequency in the absence of coupling with photons. The dielectric function obtained from 54 is this. So dispersion relation may be from कौन सा इक्वेशन 54. ठीक है. 54 ये वाला इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर पी प्लस ओमेगा टी स्क्वायर पी is equal to nq square by m multiplied by e. For the polariton here, omega t is TO phonon frequency in the absence of coupling of phonons. Transverse optically रहेगा. ठीक है. The dielectric function obtained 54 is this. If there is an optical electronic contribution to the polarization from ion cores, this should be included. ठीक है. तो another factor over here, whatever this is, क्या है? Optical electronic contribution of polarization from ion cores in the frequency range through infrared. In the frequency range from 0 up to infrared. तो एक अगर अलग frequency range के लिए ये कुछ होने वाला है. So this looks similar to this. अब ऊपर वाला बस थोड़ा सा skewed टाइप से है. ऊपर में वाला लेफ्ट वाला कर्व है, नीचे वाला भी कर्व है. ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 का एक लाइन है यहाँ पे है क्या? नहीं, येलो का एक तो लाइन दिया हुआ. उधर दूसरा वाला जगह पे जहाँ पे आयन कोर के बारे में बात किया उधर भी ऐसे ही ये घुसा दिया है. यहाँ पे इसे घुसा दिया है. 1 यहाँ पे था और यहाँ पे इंफिनिटी आ गया है. I don't know how that works, but okay, looks the same. Yeah, we look the same. Just check. Okay, this and this. आयन कोर्स की वजह से ये वाला चीज़ आया. Okay, moving down. Here we have this
Just read it once. यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है. In accordance with the definition, epsilon infinity is optical direct as optical dielectric constant. यहाँ पे अभी तीसरा डेफिनेशन है ऑप्टिकल डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एक और कुछ फ्रीक्वेंसी लिमिट में था और एक और पहला कुछ दिया था, ठीक है. ऑब्टेन्ड एज अ स्क्वायर ऑफ द ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये अलग डेफिनेशन है. वी सी दैट ओमेगा ज़ीरो ऑब्टेन्ड स्टैटिक डायइलेक्ट्रिक फंक्शन, ठीक है. पहले क्या था, यहाँ पे एप्सिलॉन ओमेगा के लिए है दिस, एंड एप्सिलॉन ज़ीरो के लिए है दिस. यहाँ पे इधर नीचे देखो ओमेगा टी आ गया डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है. विच कंबाइंस 56 58 एंड इट इज 58 है इन ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबल पैरामीटर्स. तो ये दोनों इक्वेशन मिला के ये वाला बनेगा, जिसमें यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ पे कोर वाला है, डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टी स्क्वायर, ठीक है. और दिस इक्वेशन, इसमें क्या डिफरेंस आ गया है, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है. लेकिन ये कहाँ चल गया, एप्सिलॉन इन्फिनिटी कहाँ चल गया, सेकेंड. ये लुक्स लाइक कैलकुलेशन से ये इसको गैप किया है और ये हमको शायद वर्कआउट करना पड़ेगा, तब ये दो इक्वेशन आ रहा है पूरा. ओके, मूविंग ऑन. द जीरो ऑफ epsilon omega defines the longitudinal optical phonon frequency as the pole of uh, epsilon omega defines omega t. The zero defines longitudinal phonon uh, omega L, and pole defines omega t. The zero gives this, which is the LST relation जो बाद में बन जाता है. Waves do not propagate in frequency region for which epsilon omega is negative between its poles. Omega is equal to omega t at its zero. Omega is equal to omega L. As okay, read this line carefully. Waves do not propagate in the frequency region for which epsilon omega is negative. Okay, between the pole and its zero, ये दो कोई चीज़ है. पोल क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड जीरो इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा टी ओमेगा एल. This, look, omega t and omega L, so those are poles and zeros. For negative epsilon, waves do not propagate because k is imaginary for real omega, and exponential ikx tends to exponential minus of mod k into x damped in space. The zero of epsilon omega, by our earlier argument, is the LO frequency at a low k, just as with plasma frequency omega p. The freq okay, यहाँ पे plasma frequency के साथ कुछ parallels बता रहा है, ठीक है. The frequency omega has two meanings. One is the LO frequency of omega at low k. Another is upper cutoff frequency of forbidden band of propagation of electromagnetic waves. So that's the band created. Okay. The value of omega L is identical to both frequencies.
at both frequencies. History relation, there's another video. That's a part of the same question, give 5 marks.